بسم الله الرحمن الرحيم. Chapter number 3, Enzymes, the exercise. So starting from question number 1, that is fill in the blanks. So this one, the first blank is, enzymes are composed of hundreds of dash. So this one हमने बात की थी कि enzymes होते हैं, they are usually proteins in nature, और proteins होती हैं, they are made up of amino acids. तो इसका मतलब हुआ कि enzyme भी किससे मिलकर बने हुए हैं? Hundreds of amino acids. So the answer is amino acids. Enzymes are composed of hundreds of amino acids. Blank number 2. Some enzymes consists of non-protein part known as. तो dear students आपको याद होगा कुछ एंजाइम्स तो सोलली प्रोटीन्स के ऊपर बेस्ड करते हैं, ठीक है, वो प्रोटीनिशियस होते हैं. तो कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जिनको सही तरह से फंक्शन करने के लिए एक नॉन प्रोटीन पार्ट की जरूरत पड़ती है, और उस नॉन प्रोटीन पार्ट को हमने क्या कहा था? दैट इज कोफैक्टर. क्लियर? सो सम एंजाइम्स कंसिस्ट ऑफ अ नॉन प्रोटीन पार्ट नोन एज अ कोफैक्टर. Blank number 3. Many enzymes require non-protein component called, the answer is same, the non-protein part is called the cofactor for their proper functioning. Blank number 4, it says enzymes are highly dash in nature. So dear students, enzymes are highly specific in nature. Clear? They are very high specific in nature. So dear students, जैसे कि lipase, it will act upon lipids. The amylase, it will always act upon the amylase. The amylase, it always act upon starch. Clear? इसी तरह से pepsin and trypsin, they act upon proteins, not on the lipids. Clear? So they are very highly specific in nature. Blank number 5, it says the enzymes which carry out the synthesis of dash are integral parts of ribosomes. तो dear students, हमने ये पहले पढ़ा था कि ऐसे enzymes जिनका काम होता है protein synthesis, उनके enzymes का they are the enzymes, they are the integral part of the ribosomes. So the statement is the enzymes which carry out the synthesis of proteins are integral parts of ribosomes. Now question number 2, write whether the statement is true or false and write the correct statement if it is false. So the first statement is the enzymes important in photosynthesis are found in mitochondria. So dear students, this is a false statement. Photosynthesis के जो enzymes होते हैं, they are present in chloroplast. So the correct statement will be the enzymes important in photosynthesis are found in chloroplast. The second statement is large amounts of an enzyme can accelerate the chemical reactions. So this statement is also false. The correct statement is small amounts of an enzyme can accelerate the chemical reactions. Statement number 3, it says Kelvin Melvin proposed lock and key model for enzyme action. तो the mechanism of action को समझने के लिए हमने दो ही मॉडल्स पढ़े थे, एक लॉक एंड की मॉडल और दूसरा इंड्यूस्ड रेट मॉडल. और आपको याद होगा लॉक एंड की मॉडल मेल्विन केल्विन ने नहीं बल्कि एमएल फिशर ने 1890 के अंदर पेश किया था, प्रपोज किया था. सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज एमएल फिशर proposed lock and key model for enzyme action. Clear? Statement number 4, it says the active site of an enzyme is composed of 4 regions. So this statement is again false because the active site of an enzyme consists of 2 regions. उसके 2 regions होते हैं, एक उसकी binding site और दूसरा उसकी catalytic site. Binding site जो वो binding जो है वो attachment provide करती है और enzyme substrate complex बनाती है. जब enzyme substrate complex बन जाएगा binding site पे, then the catalytic site it will catalyze the reaction and convert the substrate into products. So the correct statement will be the active site of enzyme is composed of 2 regions. Statement number 5, it says structure of an enzyme has no specific importance. So this is not true. This is a false statement. So the correct statement is the structure of an enzyme has specific importance. क्योंकि enzymes they are globular proteins और globular structure उनका बहुत अहम होता है. अगर globular structure उनका destroy हो जाए, so they will fail to catalyze an enzymatic reaction. Now question number 3. Each question has 4 options and circle the correct answer. So it's a multiple choice question. The first statement is if more substrate to an already occurring enzymatic reaction is added, more enzyme activity is seen because. इस स्टेटमेंट को जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिए. अगर हम एक पहले से एंजाइमेटिक जो रिएक्शन है उसमें जो पहले से हो रहा है उसके अंदर हम सबस्ट्रेट को ऐड करते हैं, ज्यादा सबस्ट्रेट ऐड करते हैं और ज्यादा वहां पर एंजाइम एक्टिविटी हो रही है, तो ये किस चीज की निशानदही कर रही है?
Number 1, alpha option is there is probably more substrate present than there is enzyme. So no, dear students, अगर enzyme कम होगा तो substrate add करने से वो enzyme activity ज़्यादा नहीं होगी. Option beta says there is probably more enzyme available than there is substrate. Yes, dear students, ये possibility हो सकती है क्योंकि अगर enzyme ज़्यादा होगा substrate से और अगर substrate add कर रहे हैं तो definitely enzyme activity भी increase करेगी. So the correct answer first MCQ is beta option. That is, there is probably more enzyme available than there is substrate. Now the MCQ number 2. If you add more substrate to already occurring enzymatic reaction, यहाँ तक वही पुरानी statement, and it has no effect on the rate of reaction, और अगर उसके rate of reaction पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप substrate add कर रहे हैं, enzymatic reaction हो रहा था पहले, आपने substrate add किया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा. What is the form given for the situation? तो situation को हम क्या कहते हैं? आपको याद होगा, अगर हमारे पास 100 एंजाइम हैं और 100 सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो चुके हैं, आप और ऐड करते हैं सबस्ट्रेट लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता. सो इट मींस ऑल द एक्टिव साइट्स आर ऑक्युपाइड, और जब ऑल एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स आर ऑक्युपाइड तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं सैचुरेशन. सो the option alpha is correct. So this is called as saturation, means all the active sites have been occupied. अब आप substrate add करेंगे भी, so there will be no effect on the rate of reaction. Now MCQ number 3. The rate of an enzyme catalyzed reaction. यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी गई है और उससे रिलेटेड हमें नीचे करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है कि एक एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन का जो रेट है इज कांस्टेंट अंडर ऑल कंडीशंस. तो हमने डियर स्टूडेंट्स इसको डिस्कस किया था, इट इज नॉट कांस्टेंट अंडर ऑल कंडीशंस. ठीक है, पीएच इंक्रीज करेंगे तो बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा, कम करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करेगा. टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन यूजुअली इंक्रीज करता है बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, डिक्रीज करने से डिक्रीज करता है. सो इट इज नॉट same under all circumstances. So the alpha option is not correct. Beta option says decreases as substrate concentration increases. So dear students, rate of enzyme catalyzed reaction substrate concentration increase करने से यहाँ पर हमारे पास कोई specific option नहीं देगी, क्योंकि हमने बात की थी कि substrate concentration के हवाले से हमारे पास दो options हैं. लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हो सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट अवेलेबल रेट ऑफ रिएक्शन, और अगर हाई कंसंट्रेशन में होगा सबस्ट्रेट तो शुरू में तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा लेकिन उसके बाद देयर विल बी नो मोर इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन. तो डियर स्टूडेंट्स, द बीटा ऑप्शन इज आल्सो नॉट करेक्ट फॉर दिस स्टेटमेंट. ऑप्शन 40 कैन नॉट बी मेजर्ड. तो डियर स्टूडेंट्स, इट इज मेजरेबल, सो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है. नाउ द ओनली रिमेनिंग ऑप्शन वी आर लेफ्ट विद डेल्टा ऑप्शन. इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय इनहिबिटर्स. सो यस डियर स्टूडेंट्स, जो एंजाइमेटिकली कैटलाइज्ड रिएक्शन होते हैं हम उसको कम तो कर सकते हैं लेकिन किसकी मदद से? इनहिबिटर्स की मदद से. क्लियर? और इनहिबिटर्स क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस व्हिच बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इन प्लेस ऑफ सबस्ट्रेट एंड स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर द थर्ड MCQ is delta option, that is they can be reduced by inhibitors. Now the fourth MCQ. The active site of an enzyme never changes. Alpha option is never changes. No, my dear students, it changes. तो ये first option जो है हमारी जो है वो suitable नहीं है. The beta option says forms no chemical bond with substrate. So dear students, we have studied that there is the formation of chemical bond between the enzyme and substrate. So option beta is also not correct. Option Charlie says determines the active site of an enzyme, determines by its structure the specificity of the enzyme. Yes, dear students. तो एक्टिव साइट की ही शेप होती है जो कि बेसिकली एंजाइम की स्पेसिफिसिटी को डिटरमिन करती है और उसी शेप का ही सबस्ट्रेट आकर उस पर बाइंड करता है तो तभी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है. नाउ द डेल्टा ऑप्शन लुक्स लाइक अ लंप प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ एंजाइम. सो इस तरह का कोई स्टेटमेंट हमने नहीं पढ़ी. इट्स नॉट अ लंप हियर. सो द करेक्ट आंसर फॉर MCQ नंबर 4 इज Charlie. Now the last MCQ which is given in our textbook is which statement about enzymes is not true. नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन से ऐसे स्टेटमेंट है जो कि एंजाइम के हवाले से गलत है, सच नहीं है? द ऑप्शन अल्फा सेज दे कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स विद और विदाउट अ नॉन प्रोटीन पार्ट. सो यस डियर स्टूडेंट, इट इज अ करेक्ट. सो एंजाइम्स आर प्रोटीन्स. वो नॉन प्रोटीन पार्ट के साथ हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते. हमने जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढे एंजाइम के हवाले से. ऑप्शन बीटा सेज they change the rate of catalyzed reaction. So definitely they increase the rate of reaction of enzyme catalyzed reaction. Option Charlie, they are sensitive to heat. Yes, the enzymes are sensitive to heat. Every 10 degrees Celsius increase in the temperature doubles the rate of the chemical reaction, but up to a certain limit. Clear? So ये भी enzyme से ही related है, ये true है. And we are left only with the delta option. It says they are non-specific in their action. Yes, dear students, आप समझ गए होंगे कि enzymes they are very specific in their actions.
So this is not related and it is not true about the enzymes. So the correct answer for MCQ number 5 is delta option. Now question number 4, that is of short questions. So first short question is, list 2 conditions that destroy enzymatic activity by disrupting bonds between the atoms in an enzymes. तो 2 कंडीशंस वो कौन सी थी जिसमें कि बॉन्ड्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हाई टेम्परेचर्स के ऊपर जब ज़्यादा टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से भी इंक्रीज कर जाएगा तो एंजाइम के जो एमाइनो एसिड्स हैं, उनके जो एटम्स हैं, उनकी वाइब्रेशंस वायलेंट हो जाएंगी और उनके जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे एंड दैट लीड्स टू द डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम. क्लियर. और इसी तरह से दूसरी ऑप्शन हमने दूसरी जो कंडीशन थी, द एक्सट्रीम चेंज इन पीएच, इट आल्सो ब्रेक्स द बॉन्ड एंड लीड्स टू द loss of global structure, so leading to the denaturation of enzyme. तो ये 2 conditions हैं, extreme change in pH and high temperatures. Short question number 2. It says, how do low and high temperature affect an enzyme activity? So temperature is directly proportional to enzyme activity. हमने पढ़ा था factors affecting rate of enzyme action में. Low temperature पे rate of reaction low हो जाता है, high temperature पे rate of reaction high हो जाता है, but up to a certain limit. Clear? So हाई टेम्परेचर पे भी हमने बात की थी कि एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन द टेम्परेचर एंड डबल्स द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन व्हिच इज एंजाइमेटिकली कैटलाइज्ड. नाउ द थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप? तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि प्रोस्थेटिक ग्रुप अगर एंजाइम का जो कोफैक्टर है, इफ द कोफैक्टर इज टाइटली एंड कोवलेंटली बॉन्डेड विद द प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम, so it is called as prosthetic group. Or dear students, now the fourth one is define inhibitors of enzymes. तो inhibitors हम बात कर चुके, last topic पढ़ा था इस chapter का. These are the substances which bind to the active site of enzyme in place of original substrate and retard or stop the product formation. Clear? और फिर हमने इसकी categorization भी की थी, reversible, irreversible, फिर reversible के आगे competitive and non-competitive. Clear? And number 5, the fifth short question is, how does an enzyme accelerate a metabolic reaction? So dear students, हमने पढ़ा था कि जो enzymes होते हैं, they increase millions of times the rate of reaction in enzymatically catalyzed reactions by lowering their activation energy. तो एक्चुअली वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं. और एक्टिवेशन एनर्जी क्या थी? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन. और एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने के क्या क्या तरीके बताए थे आपको मैंने, वो 3 तरीके आपको याद होंगे. बाय डिस्टर्बिंग द चार्जेस ऑफ ऑन द एक्टिव साइट एंड द सबस्ट्रेट, बाय मॉडिफाइंग द शेप और अल्टरिंग द शेप्स, क्लियर, एंड बाय ब्रिंगिंग द सबस्ट्रेट इनटू करेक्ट ओरिएंटेशन. तो ये 3 तरीके ऐसे हैं जिसके जरिए एक्टिवेशन एनर्जी को कम किया जाता है बाय द एंजाइम्स टू एक्सेलरेट द enzymatically catalyzed chemical reactions.